Assalamu alaikum. I am Stara Mukaddas, roll number 24707 from BS Education Semester 2, Education for Sustainable Development. Today I will present the topic of the curriculum objectives sustainability education. इसमें हम पढ़ेंगे पायदारी की तालीम के निसाबी अहदाफ. Goals of education: knowledge acquisition, providing students with the knowledge and skills needed for personal and academic growth across various subjects such as mathematics, science, language, history, and the arts. Critical thinking encourages students to think independently, independently, question assumptions, analyze situations, and make informed decisions. Social development: helping students develop interpersonal skills, empathy, and the ability to work collaboratively with others in a diverse society. Preparation for the future: equipping students with the skills they need for success in the workforce, such as problem solving, time management, and adaptability. नॉलेज एक्विजिशन में आएगा कि इल्म का हसूल, जैसे इल्म के हसूल में आएगा तलबा को ज़ाती और तलीमी तरक्की के लिए ज़रूरी इल्म और महारतें फराहम करना, जैसे कि जिसमें रियाजी, साइंस, ज़ुबान, तारीख़ और फ़नून जैसे मुख्तलिफ मज़ामीन शामिल हैं. और क्रिटिकल थिंकिंग में बताया जाएगा कि तनकीदी सोच कि तलबा को हौसला अफजाई करना कि वो आज़ादाना तौर पर सोचे, चैलेंज करें, हालात को तज्ज़िया करें और बाखबर फैसले करें. एंड थर्ड पॉइंट इज़ समाजी सोशल डेवलपमेंट, समाजी नशोनुमा. तलबा को बैनुल अफराद, इंटरपर्सनल महारतें, हमदर्दी और मुख्तलिफ अलख़याल माशरे में दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने की सलाहियतें पैदा कर देना. जैसे प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल की तैयारी करना. तलबा को वो महारतें सिखाना जो पेशा वराना मैदान में कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं. मसला हल करने की अहलियत, वक्त का इंतज़ाम और हालात के मुताबिक ढलने की सलाहियत, अडेप्टेबिलिटी. कैरेक्टर डेवलपमेंट: fostering values such as responsibility, honesty, respect, and resilience. Lifelong learning: instilling a love of learning and a curiosity that encourages students to continue growing intellectually and personally throughout their lives. Civic responsibility: teaching students about their roles and responsibilities as citizens, helping them understand social, ethical, and political issues, and empowering them to contribute positively to society. Cultural awareness: encouraging and the appreciation of the different cultures and perspectives, fostering tolerance, inclusion, and global awareness. कैरेक्टर डेवलपमेंट में आएगा किरदार साजी, ज़िम्मेदारी, दयानतदारी, एहतराम और साबित कदमी जैसे इक़दार को फ़रोग़ देना. और लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आएगा हमेशा सीखने की जस्तजू, तलबा में सीखने और तजस्सुस का शौक़ पैदा करना ताकि वो अपनी ज़िंदगी भर इल्मी और ज़ाती तरक्की करते रहें. सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, शहरी ज़िम्मेदारी, तलबा को इनकी शहरी ज़िम्मेदारियों और किरदार से आगाह करना, समाजी, अखलाकी और सियासी मसाइल का शऊर और इन्हें माशरे में मुस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाना.
कल्चर अवेयरनेस सकाफ़ती आगाही मुख्तलिफ सकाफ़तों और नुक्ता नज़र की कदर करना, सिखाना और रवादारी, शमूलियत और अलमी आगाही को फ़रोग़ देना। Cognitive intelligence (IQ). This refers to the traditional forms of intelligence such as the problem-solving, logical reasoning, and analytical thinking. It includes the ability to understand complex ideas, learn quickly, and adapt to new situations. Emotional intelligence (EQ). This diminishes focuses on the ability to understand and manage one's own emotions, as well as recognize and influence the emotions of others. It involves empathy, self awareness, emotional regulation, and social skills. Creative intelligence, the ability to think outside the box, generate innovative ideas, and approach problems in novel ways. This dimension is about the imagination's originality and the capacity to engage in divergent thinking. Particle intelligence, often called street smarts, mm, particle intelligence refers to the ability to apply knowledge and skills in real-world situations. It involves problem-solving in everyday contexts and understanding how to get things done efficiently. Social intelligence. This is the ability to understand and na- navigate social situations include interpreting social cues, building relationships, and understand group dynamic. It also includes effective communication and conflict resolution skills. क्रिएटिव स्किल इंटेलिजेंस में आएगा तख्लीकी ज़हानत, जैसे कि इससे मुराद वो सलाहियतें हैं जिसके ज़रिए इंसान नए और मुनफरद तरीक़ों से सोच सकता है, इनोवेटिव ख़यालात पैदा कर सकता है और मसाइल अनोखे अंदाज़ में हल कर सकता है। ये पहलू तख्लीक और कसीर जहती सोच की सलाहियत पर मुश्तमिल है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आएगा इल्मी ज़हानत, कभी इसे स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है। इल्मी ज़हानत से मुराद ये है कि इंसान हकीकी दुनिया के हालात में अपने इल्म और महारतों को किस तरह से बरक़रार लाता है और इसमें रोज़मर्रा के मसाइल को मुयस्सर तरीके से हल करने में काम को कामयाबी से सरअंजाम दे समझ सके। समाजी ज़हानत, ये समाजी गिरोही और बैन अफराद मौसलात को समझने और इनमें मुयस्सर तरीके से काम करने की सलाहियत को बयान करता है। इसमें तनाज़ात के हल की महारतें भी शामिल हैं, जबकि ज़ाती ज़हानत का अनासर भी पाया जाता है। मोरल इंटेलिजेंस, this definition refers to the ability to act in ways that are ethically and morally sound. It includes understanding right from wrong, making ethical decisions, and being guided by a sense of the integrity and the fairness. Linguistic intelligence, this definition is the ability to use language effectively, whether in writing, speaking, or the understand language. People with high linguistic
intelligence are often skilled writers, speakers, and the language learners. Musical intelligence, the ability to understand and the appreciate music rhythm and the sound. It also involves the ability to create to perform music as well as recognize patterns in musical structures. Particle intelligence, the ability to think in three dimensions, visualize and manipulate objects and navigate spaces effectively. This intelligence is important for careers in architecture, engineering, and design. Naturalistic intelligence, the ability to recognize and understand the natural world, including animals, plants, and ecosystem. It involves observing patterns in the nature and can be seen in people with a strong interest in biology, ecology, or environmentalism. मॉरल इंटेलिजेंस इखलाकी जहानत ये इस लायक की अक्कासी करता है जिसकी मदद से इंसान इखलाकी और दुरुस्त तरीके से अमल कर सकता है सही और गलत में शौर पैदा होता है सही और गलत का शौर पैदा होता है इंसान में और इखलाक फैसले करने की अहलियत पैदा होती है और जानदारी और इंसाफ की रहनुमाई शामिल होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ये ज़ुबान अल्फाज और इनके इस्तेमाल को समझने और सराहने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है इसमें इसमें नए तर्ज के इज़हार तहरीर तकरीर और मौसीकी में मौजूद लहजे या प्रिंटर्स को पहुंचाने की एहलियत में शामिल हो सकती है ये एहलियत शामिल हो सकती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कुदरती जहानत ये कुदरत जानवरों पौधों और माहौल से गहरा ताल्लुक इस्तवार करने और इनमें मुशाहिदा करने की सलाहियत पैदा होती है और जहानत तमीरात और इंजीनियरिंग और डिज़ाइन माहौलियात जैसे शोबों में ख़ास तौर पर अहम समझी जाती है A comparative study of school objectives and curriculum objectives. School objectives. These are broader long-term goals that a school set to shape the overall educational experience for students. They encompass both academic and non-academic aims such as the personal development, character building, and the preparing students for life beyond school. Curriculum objectives are the specific measurable goals set within a curriculum framework. This objective focus on what students should learn in specific student or the courses and outline the skills, knowledge and the competencies students are expected to acquire within a given time. Curriculum objectives are ये हो गया curriculum. Second है focus school objectives. School objectives tend to have a holistic focus addressing both academic and social development. These objectives often cover areas like the academic excellence, moral and the ethical growth, emotional well-being, civic responsibility, and the preparation for the future. Curriculum objective are the more subject specific and the target what needs to be learned in specific areas like the mathematics science literature arts and the more they are the focused on academic content and skill development relevant to each subject or the grade level
Third has scope, school objectives. The scope of school objective is the wide and the inclusive, extending across subject, extracurricular activities, character development, and the preparation for life in society. They also focus on the creating a conducive learning environment, fostering school culture, and ensuring students develop in well-rounded individuals. Curriculum objectives Curriculum objectives have a narrow scope, focusing specifically on the learning outcomes within individual subjects or courses. They are designed to provide students with specific knowledge, skills, and competencies in the defined academic areas such as the ethical thinking in mathematics or literacy. स्कूल ऑब्जेक्टिव स्कूल के अहदाफ ये वो तवील मदती मकसद हैं जो एक स्कूल अपने तलबा को मजमूई तलीमी तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए मरतब करता है और इनमें निसाबी और गैर निसाबी दोनों पहलू शामिल होते हैं और जैसे ज़ाती नशोनुमा माशरती शिरकत और स्कूल के आगे इल्मी ज़िंदगी के तलबा की तैयारी निसाबी अहदाफ करिकुलम ऑब्जेक्टिव निसाबी अहदाफ ये मखसूस काबिल पैमाइश मकसद है जो किसी निसाब के फ्रेमवर्क के तहत की जाते हैं इनमें महवर ये होता है कि तलबा को मखसूस मज़ामीन या कोर्सेज़ में क्या सिखाना चाहिए और इनमें कौन सी महारतें मामलात और एक मुकर्रर मुद्दत में हासिल की जाएंगी। फोकस स्कूल के अहदाफ तवज्जो आम तौर पर ये मजमूआ होलिस्टिक नौयत के होते हैं जिनमें तलीमी और समाजी दोनों की तरक्की पर जोर दिया जाता है। इन अहदाफ में किरदार साजी, तनकीदी सोच, मसला हल करने की अहलियत, तख्लीकी सलाहियत, सकाफती आगाही, शहरी ज़िम्मेदारी और मुस्तकबिल की तैयारी शामिल होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज स्कोप दायरा कार स्कूल के अहदाफ में ये निस्बतन वसी और जामिया होते हैं और इनमें पूरे स्कूल के माहौल और कमेटी तक फैले होते हैं और इनमें दायरा कार मिशन और विजन की झलक नज़र आती है जिसका मकसद तलबा के हम जहद का कामयाबी है। एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स First point, aims. Definition. Aims are broad, long-term intentions or the aspiration that describe the purpose of education. They are the general statements about what an education system or the institution seeks to achieve. Characteristics. Broad and general, focused on the big picture and the long-term outcomes, not always measurable or the specific. They define the vision or the philosophy of an educational program. Example, to foster critical thinking and promote lifelong learning in the students. Second point is definition. Goals are more specific than aims but still broad. They provide direction and define the end